नमस्कार दोस्तों। कंट्रोलिंग पीपल एंड सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। मनुष्यों का और परिस्थितियों का नियंत्रण नामुमकिन है। बट आवर सेजेस, ऋषिज एंड योगीज हैव प्रूवन दैट योर माइंड कैन बी कंट्रोल्ड। हमारे ऋषि मुनियों और योगियों ने ये सिद्ध किया है बार बार कि आपके चित्त, मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। And the question arises, why do you want to do it? क्यों आपको अपने चित्त को, मन को कंट्रोल करना चाहिए? So that you act rather than react. 99% of time we are just reacting on the basis of others' actions. ताकि आप क्रिया करें, प्रतिक्रिया नहीं। और जब आप क्रिया करने लगेंगे फिर उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। Once you start doing actions rather than reactions, you'll get happiness. So one of the things that you can do is you can do Om Pranayama. So sit in a relaxed posture, head neck back straight, shoulder relaxed. Take Chin Mudra, touching the tip of your index finger with your thumb. Rest other fingers straight. Rest it, open elbows, rest it on your knees. And take a deep inhale. Exhale. Inhale. Again inhale and repeat the same Om. Just start doing it 5 times or 10 times and see the difference within a week. You'll become more steady. Your mindset will change. Your thinking process will change. आपकी क्रिया प्रतिक्रिया बदल जाएगी. Eat healthy, think healthy, do yoga. Thank you.